Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to Apex online classes. Myself, Ishim Sikandar, and I have been teaching you intermediate part 1 syllabus. It's lecture number 6, and in the previous 4 lectures, we've discussed translation of lesson number 1, button. Now, we are going to discuss its exercise. There are some questions, and question number 1 is choose the correct answer. You will face the same question in your answer. It's very famous, it's very easy one. So you must have a book in your hands to solve this exercise. Just like me, I have a book in my hands. I'm going to read the options and the questions from the book, and you just listen and solve or tick mark the answer, right answer. I mentioned the right answers on your screen already, so that you may easily pick your answer. So let's read. The first option is, where did Norma put the lamb chops? In the oven, in the freezer, in the broiler, and D, delta is in the basket. And the correct answer is beta, in the broiler. Question number 2, there was a small man in the hallway. Answer is delta, in the hallway. It's all about Mr. Stewart, you know. And question number 3, where was the key to the bell unit door? And the answer is Charlie, in the sealed envelope. Question number 4, what was the reward for pushing the button? It's a very easy question. It was $50,000. And answer of this question is beta. What was the question number 5? What was the question of Dharma that made Mr. Stewart embarrassed? And answer is delta, D. Who do you represent? And you know, when she asked the same question, who do you represent, and Mr. Stewart got embarrassed here. And question number 6, what could have happened by pushing the button? And answer is delta, D. Somewhere in the world, some unknown person would die, and in return they would receive $50,000, you know. And question number 7, why didn't Arthur agree to the offer of Mr. Stewart for pushing the button? And answer is Charlie. He considered death of some unknown person a murder. Yes, true, because he was a good or pious person, and he considered immoral act to kill someone for the sake of money, you know. And the question number 8, why was the offer of $50,000 attractive for Norma? And answer is alpha. Question number 8, answer is alpha. She had a plan to improve her lifestyle. This is what she kept on persuading her husband to push the button and to improve their lifestyle. And question number 9, who, in Norma's opinion, was the researcher? Answer is Charlie, an eccentric millionaire. Question number 10 and the last one, why didn't Norma take the consent of her husband to comply with the instructions of Mr. Stewart? The answer, you may observe, question number 10, we have two answers here, C and D. And it has happened in the board examinations that you would face two possible answers, and don't mark the both answers. You must take or mark or fill the bubble of only one or most probable or possible answer or appropriate answer. So here is C. I'm going to read C. Listen. He considered it a murder. Yes, it is true. He considered it a murder and immoral act. But D option is more close to the statement. He considered it immoral to kill someone, unknown person, for the sake of money. It is more clear than the previous one. So you will take D option here. Second question is, make the statement true and false. It's just for information. It is not taken in your examination, or it's just for information, but we will solve it hurriedly, quickly.
because it's not important in examination point of views. Norma found the carton in the front of her door as she arrived home. Yes, it happened 2 times in the lesson, in the beginning and in the middle almost, when she came back. And the second one, Norma believed that Mr. Stewart was a guest. No, she believed that Mr. Stewart was a salesman. So second would be a false. False. Third, Mr. Stewart took out a key and opened the box for Arthur. No, he didn't open. False. Number 4, Arthur and Norma had the same reaction to Mr. Stewart's proposition. No, Mr. Stewart got aggressive and got annoyed, but Norma remained normal. And the reaction of both persons was different. Number 5, Norma could not resist calling Mr. Stewart back. Yes, it is true. She called him almost at about 5 p.m. at office time. Norma did not agree with Mr. Stewart to have the button unit brought back. False. Number 7. Arthur said he believed that Mr. Stewart's offer was a genuine one. No, he didn't. Even he didn't pronounce the same statement in the lesson. Number 8. Norma wants Arthur to understand that she is interested in the propositions because the money would help the both of them. True, it's true. She was interested to improve their lifestyle, not her lifestyle. Number 9, second last. Arthur could accept participating along with Norma if they were part of a research project. No, he didn't agree or even say the single word about agreement. And the last option, true false, is number 10. Norma called Mr. Stewart after she learned of Arthur's death. No, she didn't call because she came to know the reason of the death of her husband. And the very, very important question number 3, answer the following questions. You will have almost 10 questions from this lesson, and every question carries equal marks. I have discussed in the introduction lecture. So let's have an example. How would you solve this question? The most important topic or the most important point is to solve your answer. You must answer. मैं इसको सादा अल्फाज में अगर समझाऊं कि जो भी क्वेश्चन जिस टेंस में आपसे पूछा जाएगा आप उसी टेंस में उसका जवाब देंगे तो ये एक बहुत ही अच्छा आंसर कंसीडर किया जाएगा। और बोर्ड के एग्जाम के मुताबिक इसकी लेंथ 3 to 5 लाइंस होनी चाहिए। ये जितना आपके सामने मटेरियल लिखा है अगर आप ये खुद लिखें तो ये 5-6 लाइंस 7 लाइंस में चला जाएगा। डिपेंड्स अपॉन योर राइटिंग नैरो है या ब्रॉड खुला लिखते हैं। तो जरा गौर कीजिएगा, क्वेश्चन पास्ट में है, मतलब व्हाई डिड नॉर्मा कंसीडर, डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। ये जरा पॉइंट अच्छे से समझ ले, अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं, वो कॉमन मिस्टेक है। देखिए जी, मिस्टर स्टीवर्ट हैड ऑलरेडी हैड, पास्ट की सेंस से ही शुरू किया। ये मैं प्रेजेंट हैज हैव नहीं यूज कर रहा, इज आर एम यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसने मुझे पास्ट में पूछा और पास्ट में ही इसका आंसर होगा। हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म नॉर्मा, नॉर्मा अक्सर बच्चे जो नाम है प्रॉपर नाउन है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल में लिख देते हैं। ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक है, इसको भी जरा इसका भी ख्याल करना आपने, इसको आपने कैपिटल में लिखना है। About his arrival, but she didn't welcome, did not welcome। देखें she hasn't या she doesn't या ये आप यूज नहीं कर सकते, आप did not ही करेंगे, पास्ट में ही यूज करेंगे properly। Probably he was hurt by this kind of attitude। he was, is or am यूज नहीं करें, यानी हम पास्ट का क्वेश्चन होगा तो उसको पास्ट में ही उसका आंसर होगा। ये एक टेक्निक आपने अच्छे से याद रखनी है। 3 to 5 लाइंस आपका आंसर होना चाहिए। तो अभी आपके पास बुक होगी, हेल्पिंग बुक से आप इसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं भी आपका साथ देता हूँ, जल्दी से पढ़ता हूँ। एक पॉसिबल आंसर, एक की आंसर का, हर आंसर का एक की सेंटेंस होता है, वो अपने ज़हन में रखिएगा। बाकी आप कुछ थोड़ा बहुत ऐड करके अपने आंसर को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। Why do Norma consider the tone and attitude of Mr. Stewart offensive?
उसकी जो टोन थी उसको इतना जारहाना क्यों समझा मिस्टर स्टीवर्ट के एटीट्यूड रवैये रवैये को मिस्टर स्टीवर्ट ने, या उसके मिस्टर स्टीवर्ट के रवैये को उसने क्यों जाना? Actually, Mr. Stewart had already informed his arrival, his visit, Mr. Norm, to Mrs. Lace, and she did not welcome him properly. On this, his tone might be become aggressive, and she considered it offensive. Number two, why did Arthur disagree with his wife? Why did again past? Uh, Norma wanted to push the button to get $50,000, but on the other hand, her husband was not ready to push the button or to kill someone for the sake of money. And he considered it immoral act to kill someone for the sake of money. That's why, or therefore, he disagreed with his wife. Question number three. Why did Norma try to persuade her husband to agree with her? Actually, she wanted to fulfill her wishes, and she wanted to have nicer apartment, nicer furniture, nicer clothes and car, all these things, and a cottage on the island. That's why she kept on persuading her husband to push the button. Question number four. What were the reasons Norma gave to her husband to accept the offer? There are some reasons. Number one is she considered that they wouldn't kill someone if they push the button. If they push the button, and on the other hand, they were doing it for research project, and if they push the button, they would get $50,000 and they could improve their lifestyle. These were the reasons Norma gave her husband to push the button to accept the offer. Number five, why did Mr. Stewart continue persuading Norma? Very important, अक्सर आ चुका है. Actually, Mr. Stewart was an agent of a company, and probably he wanted to get his commission. And he also came to know that Norma was a greedy woman and she was an easy prey for him to push the button. And that's why he continued Norma persuading to push the button. Number six, what was the message Norma received on pushing the button? When she pushed the button, Norma received a call from Lenox Hill Hospital, and someone informed her about an accident, subway accident, in which a voice informed that her husband had been pushed in front of the train and he had been died then and there. This was the message she received on pushing the button. Number seven, what is the significance of Arthur's life insurance policy? Arthur's life insurance policy is very significant because this was the money she received after pushing the button. And the life insurance was of $25,000, and in double indemnity, she received $50,000. It was policy's money she received after pushing the button. Number eight, did Norma remain normal on hearing the news of the accident of her husband? No, she did not remain normal. She was shocked and surprised, and she couldn't even walk, and she was stunned on hearing the news. Number nine, why didn't Norma remain true to her husband? Is taken from extra questions. आप देख सकते हैं नीचे extra question में अक्सर पेपर में आ चुका है. Actually, she was a greedy woman, and she wanted to fulfill her wishes to at any cost. She wanted to have a cottage on island. She wanted to have nicer apartment or all these things, and she pushed the button in the absence of her husband. That's why she did not or could not remain true to her husband. And last one, write a note on the character of Arthur. Mr. Arthur, in the beginning, in the introduction, I've told you is a representative. He's a representative of good or you can honesty, or he's a pious man, good man, representative of good, and he considered murder an immoral act, and he also considered to kill someone for the sake of money is an immoral act. That's why he is a good character in this lesson. Okay, next, button.
आप देखेंगे बाकी एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन एग्जाम पर अभी इसी तरह नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अहम है आपके लिए, नया भी है। पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइंस। ये अब पेपर में जो पिछले 2 साल में जो इन्होंने स्ट्रेटेजी बोर्ड ने दी है, उसमें कोई एक लाइन जिसमें आपके 8 से 10 पंक्चुएशन मार्क्स होंगे वो लिए जाएंगे। और जैसे कि ये आप नीचे एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये नंबर 1, 2, इसी तरह 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये इस तरह आपके तकरीबन 8 से 10 पंक्चुएशन मार्क्स होंगे, और तकरीबन 0.5 का एवरी पंक्चुएशन मार्क होगा। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, मैंने आपकी इंट्रोडक्शन में से डिस्कस कर दिया है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखें, इसकी स्टेटमेंट पेपर में इस तरह आएगी। मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड embarrassed. I'm afraid I'm not at liberty to tell you that. He said, however, I assure you the organization is of इंटरनेशनल स्कोप। अब इसको अगर तो आपको बहुत अच्छे से आती है ये ट्रांसलेशन यानी पंक्चुएशन की लाइंस, आप कॉन्फिडेंट हैं कि मैं इसको 100% सॉल्व करूंगा, तो बेटा आप इसी सूरत में इसको सॉल्व करेंगे, आपको कोई और कलर यूज करने की जरूरत नहीं है। अब देखें, हमने अब ये नीचे मैंने रेड इसीलिए किया कि आपको पता चले कि कौन सा पंक्चुएशन मार्क्स आपने इसमें चेंज किया है। और अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट है जैसे कि मैंने भी कहा, तो आप उसको मार्कर के साथ हाईलाइट करके, ब्लू मार्कर के साथ उन पंक्चुएशन मार्क्स को हाईलाइट करें। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, थोड़े कंफ्यूज है, तो आप बिल्कुल सादा ऐसे कर दें, क्योंकि अपनी गलतियों को हाईलाइट नहीं करते अक्सर बाजों का। तो यहाँ पर ये इसका तरीका है। देखिए यहाँ पर मिस्टर का एम कैपिटल किया और इसका हमने एब्रीविएशन बना दिया फुल स्टॉप लगा के, मिस्टर का। आपको पता है प्रॉपर नाउन हमेशा उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो कहीं भी आ जाए, तो खासकर नाम या किसी शहर का, मुल्क का, या किसी प्रॉपर चीज का नाम आ जाए, तो उसका हम पहला जो लेटर है वो कैपिटल में लिखते हैं, जैसे स्टीवर्ट एस, मिस्टर स्टीवर्ट, ये आपका इतना काम होगा। फिर आपने रिकॉग्नाइज करना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू रिकॉग्नाइज स्पीच। एक बात ज़हन में रखें, जब आप पंक्चुएशन रखें, अभी मैं बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा, लेकिन इस पंक्चुएशन में आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स बता रहा हूँ। एक कैपिटल कि आपका प्रॉपर नाउन कैपिटल में होता है, और दूसरा रिकॉग्निशन ऑफ स्पीच। मसलन जो राइटर के अल्फाज होंगे, मसलन इस लेसन का राइटर कौन है, रिचर्ड मेसन। रिचर्ड मेसन के जो वर्ड्स होंगे वो इन्वर्टेड कॉमास में स्पीच में नहीं होंगे, और जो करेक्टर होंगे, करेक्टर्स इस स्टोरी के, उनके अल्फाज को आपने कोटेशन मार्क में स्पीच में लेना होता है, जैसे कि ये आपके सामने स्पीच नजर आ रही है यहां से लेकर यहां तक। अब आप बस ये इस पॉइंट को आप जब पंक्चुएशन कर रहे हो शुरू में, बिगिनिंग में, इस एक पॉइंट को भी फिलहाल मद्देनजर रखें, बाकी मैं आस्ते आस्ते सारे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आपने स्पीच को रिकॉग्नाइज करना। ये देखिए, मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड एम्बैरेस्ड, ये किसने कहा, ये राइटर ने कहा है, रिचर्ड मेसन के अल्फाज है। और आई एम अफ्रेड आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू दैट, और ये करेक्टर के हैं, मिस्टर स्टीवर्ट के अल्फाज हैं, तो इनको इन्वर्टेड कॉमास में ही होना चाहिए और होंगे। ही सेड, अब ये ही सेड राइटर के अल्फाज हैं, ये देखिए इन्वर्टेड कॉमास में नहीं है, फिर वो बोलेगा तो इसको इन्वर्टेड कॉमास में लेंगे। यही पॉइंट आप फिलहाल इसको ज़हन में रखें और इसकी प्रैक्टिस करें, बाकी पॉइंट्स मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा। जी, मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड एम्बैरेस्ड, यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया, स्पीच यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हुआ। आगे एक सेंटेंस जो शुरू हो रहा है उसको हम इन्वर्टेड कॉमास में ले रहे हैं, और ये कॉन्ट्रैक्शन बना रहे हैं, जैसे कि ये देखें आई एम, तो आई को कैपिटल करके ये आप अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। हमने इस लेसन में खूब अच्छे से डिस्कस किया इसको, ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए, पोजेशन के लिए नहीं है, या प्लूरल्स के लिए नहीं है। आई एम अफ्रेड आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू दैट, अब यहाँ पे उसकी गुफ्तगू रुकी है और एक पॉज, एक स्टॉप आया है, ये कॉमा लगा और ही सेड और फुल स्टॉप हो गया। इसके बाद फिर स्पीच उसकी शुरू हो रही है, दोबारा इन्वर्टेड कॉमास में लेंगे अल्फाज को। हाउएवर, ये अमेरिकन स्टाइल है, हाउएवर इज कैपिटल, इसके बाद आप जो है कॉमा लगाते हैं अक्सर, और इसके बाद बारे में बात करूंगा कि कहाँ नहीं लगाना। हाउएवर यू टेक इट, हाउएवर यू थिंक अबाउट इट, ये किस सूरत में इसमें यहाँ पे कॉमा आएगा या नहीं, इस पे हम पंक्चुएशन में मजीद डिस्कस करें। आई एश्योर यू, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, यहाँ पे पॉज है, द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ इंटरनेशनल, बात कंप्लीट हुई, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमास में ले लिया। ये पंक्चुएशन का तरीका है, इस तरह आप इसे सॉल्व करें। अब जी यहाँ से 16 to 20 आपके पेयर्स हैं, और इस लेक्चर के बाद आपके 20 पेयर्स और आपका लेसन नंबर 1 कंप्लीट है। हम नेक्स्ट लेक्चर में 21 से 25 इसकी पेयर्स डिस्कस कर लेंगे, या लेटर का जो पैटर्न है, उसका तरीका है, हाउ टू राइट अ लेटर, और इसका बेसिक पैटर्न क्या है, अगले लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे।
और साथ में लेसन नंबर 2 क्लियरिंग इन द स्काई उसका इंट्रोडक्शन होगा और थोड़ी सी ट्रांसलेशन। जी तो जल्दी से पढ़ूंगा, आसानी से आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, बहुत आसान है, मैं वही सेलेक्ट कर रहा हूँ जो आप पहले पढ़ चुके हैं मैट्रिक में, या बहुत आसान है। बिसाइड और बिसाइड ये मैंने डिटेल से डिस्कस कर दिया ट्रांसलेशन में। ऊपर वाला बिसाइड जो है पहलू के साथ होना, और दूसरा बिसाइड्स एक्सेप्ट यानी के अलावा। शी वॉज सिटिंग बिसाइड हर हस्बैंड, अपने शोहर के पहलू में बैठी हुई थी। आई रेड मैनी नॉवेल्स बिसाइड मिस्टर चिप्स, मिस्टर चिप्स के अलावा मैंने बहुत सारे नॉवेल्स पढ़े हुए। बर्थ पैदाइश, शी गेव बर्थ टू मेल बेबी, दूसरा बर्थ जो आप ट्रेन में रिजर्व करते हैं सीट अपनी, शी वॉज स्लीपिंग ऑन द बर्थ। दूसरा जी ब्रेक, तोड़ना किसी चीज को, कैन यू ब्रेक दिस ट्रिक, और ब्रेक दूसरा साइकिल की, जैसे मोटरसाइकिल की ब्रेक्स होती हैं उसके लिए। स्पेलिंग में बस अच्छे से याद करें, डिफरेंस रखें, आगे पीछे ना कीजिएगा। दिस साइकिल हैज नो ब्रेक्स। बॉर्न, पैदा होना, और नीचे बॉर्न बियर की दूसरी फॉर्म में भी जैसे ये कि बर्दाश्त करने की सेंस में भी आता है। अवैस वाज बोर्न इन मुल्तान, और सलीम हैज बोर्न ऑल हार्डशिप्स मैनफुली। एंड बीट, मारना, ही वाज बीटन टू डेथ, और दूसरा बीट चुकंदर और या कुछ मीठा, एक स्वीट और सैलड में इस्तेमाल होने वाली ये एक रूट है। बीट टेस्ट, टेस्ट स्वीट। थैंक यू सो मच। Myself, HM Sikandar, I'm teaching you intermediate. Hope you are enjoying. Or if you have any sort of problem, you can have live session with me. Or inshallah, very soon I will be live, and you can ask all the questions. And inshallah, see you in the next lecture. Thank you so much. It's Apex LMS. You can contact with us. Thank you so much. Inshallah, I will see you in the seventh lecture. Allah Hafiz.